सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान आज ऐसा बार बार हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की अपने साथी जजेस के साथ नोकझोंक होती रही। इस केस की आज चौथी समाअत थी जो बराह रास्त दिखाई गई और सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में ही जब MQM पाकिस्तान के वकील फैसल सिद्दीकी दलाइल दे रहे थे और जस्टिस आयशा मलिक ने उनसे सवालात शुरू किए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि मैं बेंच के मुअज़्ज़ज़ अरकान से दरख्वास्त करूँगा कि पहले वकील को दलाइल मुकम्मल करने दें। आप जो बहस कर रहे हैं कि लॉ में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो तो अंडरस्टूड है, सिर्फ यह है कि टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स हम इसको लॉ में पढ़ेंगे। मैं टू द एक्सक्लूजन आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ एंड द रीजन आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इज टू कम टू माय आर्गुमेंट अबाउट कन्फर्मेंट under Article 190. If I may just make one point on this. You see, there are two issues here. Yes. I'm interject now. I'm here to hear you. Please conclude your submissions. If someone wants to ask a question, if you start responding to each query, I don't even know what your argument is. And I would request the honorable members of the bench to at least let counsel complete his submission. Federal law has also been defined. Law has not been defined. Existing law. Federal law. Siddiqui sir, please continue your arguments. Would have been used. Mr. Siddiqui, it seems that, albeit the fight is about me as being as a master of whatever, you're not hearing what I'm saying at all, and you're completely ignoring. Sir, I'm not. I mean, you don't want to make your submissions. You should just sit down and answer questions. I'll complete my submission. So why aren't you making a submission? इसके बाद जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी वकील फैसल सिद्दीकी से सवालात करना शुरू किए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने एक से ज़ायद बार कहा कि पहले वकील को बात मुकम्मल करने दें। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा। You say that law. I don't know what you say. I still have to note it. Can you please complete your thought? So let me understand what you're saying. So then the question, I will understand the question also. My submission is that the word. Let me first ask up to whatever you said. Please, can you? I don't know. The question has to follow a submission. Please, can you conclude your submission, Mr. Faisal Siddiqui? Otherwise, we'll have to spend forever on this case. Sir, may I? आप जरा अपना conclude कर लें submissions. Is there any equivalent in the 1973 Constitution? As far as I can, I don't. Mr. Faisal Siddiqui, you have been I'm not aware of it. You have been rightly stumped. Please persist therefore, with your submissions. Therefore, my question to you is that here we have to look at the word law as used in Article 191. What does law mean over there? My short answer to that. I think counsel. Sir, I'll just complete my I think counsel is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. An opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer after it, he concludes his submissions with the greatest of respect. Doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question now. इसके बाद कुछ देर तक समाअत बगैर किसी मुदाखलत की जारी रही, लेकिन फिर एक मरहले पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से वकील से सवाल करने पर मुदाखलत की और बात मास्टर ऑफ द रोस्टर की बहस तक चली गई। और ये वो इस्तिलाह है जो माजी में जस्टिस मुनीब अख्तर ने ही इस्तेमाल की थी और चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर करार दिया था और आज उन्होंने इसकी वजाहत भी की। Let me therefore ask you the question which I have asked Mr. Salahuddin and Mr. Zaid Ibrahim. I thought if we talk about which question comes first, now another question has been put on another question. Can you answer mine and we get on with it, and another question can be asked. So please don't mix up my question with other questions. You respond to my question. Let another question be asked after you've given an answer. Sir, thank you. Sir, my answer is
that reduce. Never take my permission. Sir, Double standard. नहीं sir, आप मुझसे नहीं कोई बात नहीं, लाइटर नोट आगे बढ़े. But why don't you say so? End of story. What's more to be said? Sir, what is this law? सबने Mr. Siddiqui, sorry. Is this your answer? नहीं आंसर हुआ है, बात तो कर लीजिए, बात कर लीजिए. वैसे सिद्दीकी साहब, मैं सबसे आज मैंने सबसे कम सवाल पूछे. सेक्शन 2 पे तो फिर आपका मैं ले लूँ. सिद्दीकी साहब, मैंने आज सबसे कम सवाल पूछे. कम से कम यही राइट मास्टर ऑफ द रोस्टर को दे दीजिए. इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बात का वो ये है जो मैंने सवाल उनसे किया था अपना सलाउद्दीन साहब से, जाहिद इब्राहिम साहब से, दिस लॉ आप तो इसको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं ना, बट व्हाट दिस लॉ डज इज इट मेक्स पार्लियामेंट द मास्टर ऑफ द रोस्टर फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. आप इससे नहीं कर रहे हैं. this law. You're missing the point. You were present. आप अपना जवाब तो सुन लेना आपका पहले. आप जवाब दीजिए प्लीज. I'll tell you. आप बात तो कंप्लीट कर लें प्लीज. Because it is that committee is the creation not of the full court, but मैंने आपसे 2-3 बातें और भी पूछी थी. the committee is the creature and creation of parliament. It is the parliament's will that is prevailing, and therefore at the plane of principle for which you don't need any textbook. मेरी इब्तदाई बात ये थी, is that parliament becomes the master of the roster. This is my question to you. मेरी जो इब्तदाई बात थी वो ये थी कि अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग कॉल ना करे, इब्तदाई बात थी, इब्तदाई, तो पार्लियामेंट की बात और फुल कोर्ट की बात तो रहती नहीं रहे ना. Why are you hesitating? से आप लोग अपना काम सही करें तो यह ना लेजिस्लेशन की जरूरत बनती ना कुछ. अब जब लेजिस्लेशन बन गया, हम कहेंगे हम किसी से अकाउंटेबल नहीं है. हमारे पास जितने केसेस बढ़ते जाएं हम फैसला करें, ना केस एक केस सुने दिन में 50 केस सुने, हमारी मर्जी है. ठीक है, नहीं सॉरी, इस तरीके से नई चीज़ें चल सकती हैं. हर अदारा को खुद एहतसाबी करना होगी सबसे पहले, इससे पहले कोई और उसकी एहतसाबी करे. तो पता नहीं, ये सीधी सीधी बात है. अब सीधी सादी बातें करें. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पार्लियामेंट ने 3 जजेस की एक कमेटी बनाई है जो चीफ जस्टिस के साथ मिलकर बेंच तश्कील देगी. इस पर आज दौरान समाअत जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान हो और वो जीती हो. तो इस पर जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि स्पोर्ट्स से मेरा भी ताल्लुक है, कप्तान और नायब कप्तान ज़रूर होते हैं. मिस्टर सिद्दीकी, हमने स्पोर्ट्समैन कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान और वो जीती हो? Mr. Siddiqui, you can ask for the in-camera proceedings. वैसे सिद्दीकी साहब, स्पोर्ट्स से मेरा भी ताल्लुक है, कप्तान और वाइस कप्तान जरूर होते हैं. समाअत के दौरान एक मरहला ऐसा भी आया जब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि यह सवाल हो ही नहीं सकता कि फुल कोर्ट बन गया तो अपील नहीं होगी. इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स ये सोच सकता है कि यह नुक्ता रेलिवेंट नहीं है, मगर मेरे नज़दीक ये रेलिवेंट है. तो कहना ये प्रॉब्लम है कि फुल कोर्ट हो गया तो अपील नहीं है, तो फिर आप इस कानून इसका जवाब दे रहा हूं. नहीं, जवाब नहीं होगा. ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है. मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है. There may most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant, because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away, because किसी को right मिलेगा, किसी को right नहीं मिलेगा. Again the question will be, ये कैसे decide होगा? Parliament has said appeal होनी चाहिए, और अपील होनी चाहिए का मतलब है that every order of the Supreme Court under 183 has to have a right of appeal. It doesn't mean that I have the option to choose कि अब full court बैठ गया तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ने केस. Right of appeal is a right of appeal, which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam recognizes that right of appeal. So यहाँ कैसे हम वो right ले लेंगे वापस और कहेंगे नहीं यहाँ नहीं है क्योंकि हम सब बैठ गए. बताइए, आखिरी इस फुल कोर्ट से पहले कौन सी फुल कोर्ट थी? I think 2015 सर. कितने साल गुजरे?
जी 8 साल हो गए। तो हम उस केस के लिए सिर्फ फिक्रमंद हैं या हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद हैं? हमें ये तो नहीं बताना है कि फ्यूचर में क्या होगा। हमारे सामने जो मसला आता है, और हमेशा ही कहा गया है, उसी मसले को हल करो जो आपके सामने आ जाए। Was there a thought process and thereafter it was drafted keeping in mind कि जी फुल अगर कोर्ट हियरिंग करेगा तो उसकी नहीं होगी, and if it was thought about it, why was it not mentioned in the My response would be, so the obvious conclusion is that there is a flaw. अपील में ये बताया गया कि the appeal shall be heard by the larger bench, ठीक? लार्जर बेंच के नंबर नहीं बताए कि क्या एक जज मजीद बैठ के लार्जर बेंच होगा, 2 जज मजीद उसमें होंगे। लार्जर बेंच तो हो ही नहीं सकती ना, जब फुल कोर्ट हो गया तो there is no larger bench। आज की समाअत में MQM के अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील ने भी दलाइल दिए, जिसके बाद समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई।